Okay. So today we will be starting chapter number 4, which is sampling of the continuous time signals. And before moving to this, okay, assignment quiz आपका फिर आज नहीं लेना क्योंकि मेरे ख्याल है सीआर ने कहा हुआ था कि आज ना लें कल कर लें. ठीक तो Yes. Okay, sampling of the continuous time signals. And what is sampling? In fact, हमारे पास एक continuous time signal मौजूद है और हम उसे discrete time samples में convert करना चाह रहे हैं. That's the purpose of this chapter. और हम इसके pictorially भी इस process को देखेंगे और हम इस process को mathematically भी देखेंगे. Okay, now overall procedure है क्या? That's why we are sampling. That's the question. कि देखिए हम discrete signal processing use करना चाह रहे हैं. So what we are doing, we have our signal, which is the time domain signal, XCFT continuous time signal है. We are converting it through C to D converter. It should be C to D because right now we are interested in इसको C to D हम कहते हैं and D to C. Because digital में हम उसको नहीं जा रहे, amplitude axis पे हम नहीं जा रहे. So XCFT is a continuous time signal that's passing through the C to D block, and this block is responsible of converting this continuous time signal into discrete time sequence. And the answer for why we are doing it, we are throwing this X of n to this digital signal processor or discrete time signal processor to process this signal. Suppose this was a noisy signal. So in that case, we are passing this. In that case, digital signal processor will be a low pass filter that would be removing the high frequency components from this X of n. And as a result of that, it would be giving us that Y of n, the filtered output. And then that Y of n should be converted back to the continuous time signal in order to listen that. So again, the whole picture of the discrete time signal processing is this, that you have a continuous time signal, you will be converting it into a discrete time sequence, you will be processing your discrete time sequence, and you will be getting your output, which is Y of n, and then that Y of n should be converted back to the continuous time signal in the real world, जो भी आपने उसके साथ उसको सुनना है, जो कुछ भी आपने करना है उसके साथ. So that is YCFT, the reconstructed signal. Now, पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि हाउ दिस ब्लॉक इज वर्किंग. सो दिस C to D ब्लॉक जो है इसको हम देखते हैं, which is क्या है, XCFT हमारे पास एक सिग्नल आ रहा है, इस C to D ब्लॉक में जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन सम सैम्पलिंग टाइम ये C to D ब्लॉक जो है दैट इज throwing out or spitting out this X of n, which is XC of nt, the sample values at different ends. ठीक हो गया बेटा? हाँ ना तो करते जाओ ना साथ. जी जी सर. आपका नाम क्या है जिन्होंने जी जी सर कहा है? शेरोज सर. शेरोज. यस सर. शेरोज बेटा आप और मेहरताबा, यू आर सिटिंग. मेहरताबा, ओके. शेरोज, यू विल बी इन्वॉल्व. आपने हर चीज का जब प्रॉम्प्ट करते रहना है. टुडे यू विल बी प्रॉम्प्टिंग. ठीक हो गई बात? ओके, ताकि मुझे जो है ना, मैं आपको बताता हूँ ना, एक बंदा जरूर मेरे साथ इन्वॉल्व रहा करे. सो this is the block, and now we are looking at the inside, what is happening inside this block. XCFT is a continuous time signal, and now that is being multiplied with some SFT. We will be seeing कि ये SFT क्या चीज है, and then as a result of this multiplication we are getting XSFT, and then these are in fact the impulses at different values, और फिर उसके बाद इसको हम इस ब्लॉक में से गुजारते हैं. But before going into this block, first of all we see what is XCFT, what is SFT, and as a result of that we are getting XSFT. So let's start, and we will be looking at this sampling process both time and frequency domain simultaneously.
सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। और इसको मैं कह देता हूँ दिस इज, ये टाइम डोमेन में हम देख रहे होंगे इस साइड पे, एंड दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो मेरे पास XCFT है, कोई रैंडम सिग्नल मैं ले लेता हूं। And please, if you have any question, anytime you can stop me. So XCFT is my continuous time signal. Okay, suppose this is my, so this is my XCFT. This is my XCFT, any continuous time signal. This is time axis. Now the Fourier transform of this will be the continuous time Fourier transform, because it's a continuous time signal. So here it will be XC of j omega, capital omega के साथ, and I am assuming कि ये मेरे पास इसका Fourier transform है. Just an assumption, but one more assumption is that the maximum frequency content is omega n, and it's a band limited signal. Band limited क्या चीज है? Band limited है, the amplitude is 1. Band limited है कि omega n से ऊपर आपका जो xj of omega है, it is equal to 0 for omega greater than omega n. ठीक होगी बात? So omega n से ऊपर there is no spectral leakage, there is no frequency content over this omega n minus omega n. So it's strictly band limited. इसको हम कहते हैं strictly. That's the assumption we are making. Agreed? यहाँ तक कोई problem है? No sir. Okay, great. Now let's move to, अब हमने क्या करना है? पीछे अगर हम जाएं, so we have to multiply this with this S of t. Now what is this S of t? It is an impulse train. Impulse train क्या होती है बेटा? Impulse train is again a time domain sequence, but train of impulses. Suppose this is 0, t, 2t, 3t, minus t, minus 2t, and from minus infinity t, train of impulses running. ठीक है, मैथमेटिकली इसको किस तरह से लिखेंगे? एनी वॉलंटियर? अगर मैं इस एस ऑफ टी को लिखना चाहूं मैथमेटिकली तो व्हाट इट वुड बी? शेरोज, एनी आइडिया बेटा? No sir. सिंगल इंपल्स कैसे लिखते हैं? अगर सिंगल इंपल्स हो तो क्या कहते हैं हम इसको? Delta sir. डेल्टा टी. गुड. ठीक, अब मेरे पास क्या सिचुएशन है? अब मेरे पास मल्टीपल इंपल्सेस हैं, तो क्या लिखूं मैं इसको? ऑफ कोर्स देयर इज अ चेन है, तो उसको मैं कह सकता हूं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी समेशन k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा t सिंगल इंपल्स माइनस k t. So at different values of k, I will be having impulses from minus infinity to infinity. जो दो impulses का डिस्टेंस है, दरमियानी डिस्टेंस जो है वो क्या है? वो t है. ठीक है ना? इनके Yes. दरमियान डिस्टेंस t है. मल्टीपल डिस्टेंसेस पे यानी t k इज इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, k इज इक्वल टू 1 पे t पे ये वाली पल्सेस आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2 पे ये वाली आ जाएगी, t इज इक्वल टू 3 पे k इज इक्वल टू 3 पे ये वाली आ जाएगी, और k इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आपके पास एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपके पास आ जाएगी. ठीक है बात? सो दैट्स योर impulse train mathematically and pictorially. Any question? No sir. अच्छा, ये आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में इंपल्स ट्रेन वगैरह नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी सर, बट अब याद नहीं है सही से. बस कोई बात नहीं, कोई बात. अच्छा, अब हुआ ये कि यहाँ पे आपने कहा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने कहा कि हम इसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन आपने की है, इस सिग्नल को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ क्या करना चाहिए हमें बेटा, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन थी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होनी चाहिए, कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन होनी चाहिए। कन्वोल्यूशन किसके साथ होनी चाहिए, एस ऑफ एन के साथ। ये एस एफ है बेटा, ये XCFT था, XCFT मल्टीप्लाई हो रहा है SFT के साथ, और हम अगली स्टेज पे जाएंगे जिसको हम कह रहे हैं XSFT, अभी हम देखते हैं कि वो क्या चीज है, बट राइट नाउ ये मेरे पास XCFJ ओमेगा है, विच इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, द फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर मौजूद है। सो हियर अगेन आई विल बी मल्टीप्लाइंग विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इम्पल्स ट्रेन, ऐसा है ना? यस सर। ठीक है ना? यस सर। कोई और इस क्लास में बैठा हुआ है या सिर्फ एक ही बंदा है? एनीवेज, अच्छा जी, अब मेरे पास कन्वोल्यूशन है, तो इस कन्वोल्यूशन क्या होगा, एक्स एस एफ जी ओमेगा जी। एनी आइडिया बेटा शरोज के फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इसका क्या होगा, इस इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सर स्ट्रेट वन। नो, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इम्पल्स ट्रेन इज एन इम्पल्स ट्रेन, के आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम होगा, दैट्स एन एग्जांपल इन द बुक, आपकी जो सिग्नल एंड सिस्टम्स की बुक है उसके अंदर ये एग्जांपल है, उसको आप देख लीजिएगा कि अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं, कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इम्पल्स ट्रेन, दैट इज एक्चुअली द इम्पल्स ट्रेन एज वेल, बट वो भी इम्पल्स ट्रेन है। ठीक हो गई, this is now omega axis. Now the distance between these impulses is 2 pi over t. So that would be 4 pi over t, 6 pi over t, 8 pi over t, minus 2 pi over t, minus 4 pi over t, something like that. And the amplitude is 2 pi over t as well. So how would I write this? Agar main sorry, this is not x of this. This is s of j omega. S of t का s of j omega Fourier transform. So if I'm interested in writing s of j omega, जी बेटा बताएंगे? इस अब आपको पता है कि किस तरह से लिखना होता है, डेल्टा ऑफ t माइनस के टी मैंने लिखा था, तो अब क्या लिखूं मैं? सर समेशन ऑफ k is equal to minus infinity to positive infinity Good. and delta of t and delta of n minus k of 2t. बेटा t कहाँ से आया? यहाँ पे कहीं पे t है, स्मॉल t कहीं नजर आ रहा है आपको इधर? अगर ये इम्पल्स है फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे मेरी, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? ये अगर 0 पे है तो इसको क्या लिखूंगा मैं? दिस इज डेल्टा ऑफ ओमेगा। यस सर। ये डेल्टा ऑफ अगर t थी 0 पे, तो ये डेल्टा ऑफ ओमेगा है, जस्ट अ नोटेशनल चेंज यार, कोई ऐसी बात तो नहीं, ठीक है ना? यस सर। तो आप बताओ क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे? डेल्टा ऑफ ओमेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा, जबरदस्त, माइनस माइनस k ऑफ के या के, अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? 2 पाई ओवर 2 pi over t. मल्टीपल डिस्टेंसेस ही चल रहे हैं ना, वहां पे t का डिस्टेंस था तो t लिख दिया था, यहाँ जो डिस्टेंस है इनके दरमियान में मल्टीपल डिस्टेंसेस पे ये आपके पास इम्पल्सेस पड़ी होंगी, तो आपने लिख लिया, ठीक है? यस सर। एंड वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज 2 पाई ओवर t, जो उसका एम्पलीट्यूड है। यस सर। ठीक है, इधर तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? तो हम साइमल्टेनियसली टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को देख रहे हैं। टाइम डोमेन सीक्वेंस था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, एंड वी सेड
that we are multiplying it with s of t, and s of t is an impulse train. तो impulse train आपने ये लिखी, ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरह से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रैंडमली हमने कहा कि ये है, बट वन लिमिटेशन हमने इसके ऊपर कंडीशन लगा दी, दैट इट इज strictly band limited, and band limited is shown here, that xc of j omega is equal to 0 for omega is greater than equal to omega n. Omega n से बाहर there is no spectral content available, and then यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी इम्पल्स ट्रेन के साथ, तो इस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन आ गई, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है दैट इज अगेन एन इम्पल्स ट्रेन. बेटा जिसका माइक खुला हुआ है वो प्लीज बंद कर दे. यार आप बता दें उनको, किसी को बता दें माइक ऑफ कर दें. Yes, sir. ओके, द इम्पल्स ट्रेन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट वुड बी एन इम्पल्स ट्रेन एज वेल, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 2 पाई ओवर टी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज इम्पल्सेस इज 2 पाई ओवर टी, एंड मैथमेटिकली वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, that delta omega minus k 2 pi over t, this is the distance between the impulses, k is the multiples जिन पे ये impulses पड़ी हुई हैं, and delta of omega is the impulses, 2 pi over t is its amplitude. So this is the way we can write the impulse train. ये आपने देख लिया. अब xs of t को देखते हैं. Impulses are being multiplied with this time domain sequence. So this is a property of multiplication of impulses, that whenever an impulse is multiplied with some signal, what happens? Again, signals and systems is coming into action. This property is very common there, very commonly used there. Whenever some signal, suppose मेरे पास कोई signal है, suppose this is f of t, whenever this is multiplied with some impulse which is at some t naught, if this is multiplied with this, what will happen? I will be getting an impulse at that particular location, but this time the amplitude of this impulse will be f of t naught, the amplitude of this signal at that particular location. So this is the multiplication property of an impulse. So as a result of that, what's happening now? क्या होने जा रहा है? We have this signal. ये मेरे पास continuous time signal मौजूद था, and these impulses are being multiplied with this. So as a result of that, I will be having impulses, but the amplitude of these impulses will be scaled with respect to your continuous time signal. ठीक हो गई बात? Yes, sir. It is 0 t minus t 2t minus 2t, something like that. And mathematically, how we will write it, that f, this is x s of t. X s of t is what? That is x c of t multiplied with s of t. This is my s of t. Now let's do it on next slide. Okay, so x s of t is equal to x c of t multiplied with s of t. We know what is x of t, s of t, that is summation n is equal to minus infinity to infinity delta of t minus n t. K लिखूं या n लिखूं, it's the same thing, doesn't make any difference. And then as this is independent of this summation, so I can bring it in. So n is equal to minus infinity to infinity x c of t delta of t minus nt. Now invoking the property of multiplication of impulses, what will be happening? That I will be having n is equal to minus infinity to infinity x c of nt delta of t minus nt. So these are the impulses. ये जो चीज मुझे यहाँ पे मिल रही है, these are the impulses. So इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड होगा xc of 0.
इसका एम्पलीट्यूड होगा xc of t, इसका एम्पलीट्यूड होगा xc of 2t. So the amplitude of this is xc of 2t, इसका एम्पलीट्यूड है xc of 3t, इसका एम्पलीट्यूड है xc of -3t. So these are the amplitudes associated with the continuous time signal. So this is my xs of t. टाइम डोमेन में ये जो स्केल्ड इम्पल्सेस आ रही हैं, ये मेरा मैथमेटिकली इस फॉर्म में मौजूद है. एनी क्वेश्चन? समेशन जो है सर, जो सेकंड स्टेप में जो था समेशन सिर्फ हमारे पास डेल्टा फंक्शन पे थी, तो हमने सी के ऊपर क्यों अप्लाई की है? कहाँ पे? इधर बात कर रहे हैं, इसी स्लाइड पे? यस सर. हम बात ये कर चुके हैं. दिस इज, यहाँ से है कि whenever an impulse is multiplied with some function, the function goes, function vanishes, and we get an impulse at that particular location. Location change नहीं होती, but the amplitude of the impulse is changed with respect to the function at that particular level. This is the multiplication property of ठीक हो गया बात? जी सर. तो इसी को इन्वोक किया यहाँ पे इस स्टेप में, यानी इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए आई एम इन्वोकिंग delta of t minus nt is being multiplied with xc of t. Xc of t has gone. I am getting multiple impulses, but the multiple impulses has amplitude of the scaling factor with respect to your continuous time signal. Got it, beta? जी सर. Okay. Any other? नो सर. Okay. अब आते हैं इस साइड पे. यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन की थी, अब कन्वोल्यूशन हो रही है इस साइड पे. यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, यहाँ पे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे ऑफ इम्पल्स. Now what happens whenever you convolve some impulses with some function, the impulse vanishes and you get the same function at that particular location. यहाँ पे क्या था? आपने कहा था कि सिग्नल खत्म हो जाता है और इम्पल्स रह जाती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड स्केल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन. लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? आपका जो एम्पलीट्यूड है, जो इम्पल्स है, वो गुम हो जाती है, बट यू आर गेटिंग जो उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. सो व्हाट हैपेंस हियर? This would be my, that would be, this is xs of t. So now I am looking at xs of ओमेगा. क्या होगा अगर ये जीरो वाली इसके साथ कन्वॉल्व होगी तो क्या होगा? आई विल बी गेटिंग दिस थिंग, द इम्पल्स वैनिशेस एंड आई एम गेटिंग दिस कॉपी हियर. जब 2 पाई ओवर टी वाली के साथ इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? आई विल बी गेटिंग वन मोर कॉपी. -2 पाई ओवर टी के साथ होगा तो क्या होगा? आई विल बी गेटिंग वन मोर कॉपी. इस तरह से मल्टीपल कॉपीज जो हैं आपको मिलती चली जाएंगी. This is xs of j omega and the amplitude of this is 1 over t. Now let's see कि ये जो आपका xs of j omega है, this is, इसकी वैल्यू क्या है? इसको किस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका लिखते हैं? So whenever, look, x s of t was xc of t multiplied with s of t. Now, if we are interested in xs of j omega, which is the Fourier transform of this thing, that would be equal to what? This is by definition equal to 1 over 2 pi xc of j omega.
convolve with S of j omega. You have S of j omega, you have xc of j omega. So what it will be, it is 1 over 2 pi xc of j omega, and that is being convolved with S of j omega. And what is S of j omega? That was 2 pi over t summation k is equal to minus infinity to infinity delta of omega minus k, ये था 2 pi over t, ये आपके पास मौजूद है. So now again you can invoke the property, convolution property of impulse. So as a result of that, what you will be getting, this 2 pi will be cancelled with this thing. So you will be getting 1 over t. Applying the property, you will be getting k is equal to minus infinity to infinity. This time, this deltas will be removed, and as a result of this convolution, you will be getting xc of omega minus k 2 pi over t. So you are getting multiple copies of this signal xc of j omega at multiple locations of 2 pi over t. Distance वही रहेगा उनके दरमियान में, लेकिन multiple values of k के लिए वो आपको multiple copies जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी. So here so this would be 1 over t summation from minus infinity to infinity xc of omega minus k omega s भी मैं कह सकता हूँ because omega s is equal to 2 pi over t radians per second. So this is 4 pi over t or omega s. Sorry, this is omega s, this is 2 omega s, this is 3 omega s, और ये इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा. 2 pi over t is equal to omega s radians per second, and amplitude is 1 over t, which is shown here. Questions, please. क्या रोज? Any question बचा? No sir, इस slide पे नहीं है sir. ये सारा both pictorially and mathematically कोई confusion इन तमाम expressions में? Sir, जी बोलो. next slide में आपने जो 1/2 pi जो externally बाहर लिखा है वो कोई उसका बता दें. This is by definition, beta. This is by definition of the convolution. Again, properties of the continuous time Fourier transform में जाएं तो time domain multiplication जो है, that is in fact convolution in frequency domain and multiplied 1 over 2 pi के साथ multiply हो रहा है. That's coming from the properties of the continuous time Fourier transform. Yes sir. ठीक है? Clear है बच्चा? Yes sir, yes sir. Okay बेटा. अच्छा जी, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यहाँ से देखते हैं. अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं XSFT पे. XSFT देख लिया, and in fact associatively we have seen XSF j omega भी देख लिया. हम दोनों simultaneously देख रहे हैं टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को, तो हम इधर पहुंचे हुए हैं. अब टाइम डोमेन में वो क्या कह रहा है कि कन्वर्जन फ्रॉम इम्पल्स ट्रेन टू डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस. व्हाट वी हैव हियर, we have in fact scaled impulse train, scaled with respect to your time domain sequence, and now we have to convert this impulse train to sequence generator. And in fact, the amplitude of these signals are associated with this time domain sequence, so we are interested in these samples. So what we will be doing, we will be converting this t into n. ठीक है, तो अब हमने XSFT को convert करना है n में, and how we will be doing it, we will be normalizing this time axis, just a mathematical kind of thing, और we will be removing this t. divide करेंगे t के साथ, तो आपको 0, 1, 2, 3 पे आपको सैंपल्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे. सो t is replaced with nt. सो क्या हो जाएगी सिचुएशन यहाँ पे? XS of t will be converted into x of n, and that is nothing but k is equal to minus infinity to infinity. This is xc of k delta of n minus k. Again, shifted impulses, and weighting is done, which is coming from xc of nt. So k is equal to nt हो गया, and t is now n. So now this XS of t
the sequence, the impulse train थी, weighted impulse train थी, that is now converted into discrete time sequence. So that's x of n. So we started with x3 of t and we are ending with x of n, the discrete time sequence. Continuous time sequence से हम discrete time sequence में आ गए. Pictorially, what is this? Pictorially, it is something like that. Now these are the samples, and of course, according to ये जो dotted line है, that is xc of t, and these are my samples. तो ये samples हैं. इसका जो amplitude है, that is x of -2. इसका amplitude है x of -1. इसका amplitude है x of 1. ठीक है? All these amplitude are associated with x of c of t, जो कि continuous time signal मेरे पास मौजूद था. And now what is frequency domain? क्या किया है मैंने यहाँ पे? मैंने इसको यहाँ पे टाइम डोमेन, यहाँ पे इसको एक्सेस को स्केल अप किया है डिवाइड करने से t से. सो 0 1 2 मुझे मिला है जब मैंने इसको स्केल किया है t से डिवाइड करके. यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ t के साथ. द इनवर्स इफेक्ट व्हाट वी डू इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी एक्सिस. सो व्हाट इट विल बी डन. तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस वुड बी xf ऑफ ओमेगा, जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा x ऑफ ओमेगा या x of exponential j omega as your book says, and that is 1 over t, k is equal to minus infinity to infinity xc of omega over t minus k 2 pi. That's it. या इसको मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, that is omega s over t. It's a thing. Sorry, omega over omega s over. And what's happening there? अगर एक्सेस पे देखा जाए पिक्टोरियली क्या सिचुएशन है. पिक्टोरियली हमारे पास अब एक्सेस जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो गई है. मेरे पास मल्टीपल कॉपीज मौजूद थी जिनका एम्पलीट्यूड जो था वो 1 over t था. इनिशियली इट वाज ओमेगा s, अब ये 2 pi over t था. अब मैं इसको 2 pi 4 pi minus 2 pi minus 4 pi. So this is my x of exponential j omega, which is discrete time Fourier transform. And look at this. This was my xc of j omega, which was continuous time Fourier transform. And again, we are reassuring that the CTFT from minus infinity to infinity, whatever we are seeing, that would be a single copy. जो भी frequency content, जो भी information मिलेगी, वो uniquely just once repeat नहीं होगी, वो just once represent होगी. जबकि discrete time Fourier transform में we are having the frequency content multiple times, and that is coming. अब sampling के context में देखें, so it is sampling which is introducing these multiple copies. डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सी ट्रांसफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एज CTFT is evaluated at this unit circle, so that's why we are getting repetition. Second chapter के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो we have already concluded that x of exponential j omega plus 2 pi is in fact x of exponential j omega. So it is periodic with period 2 pi. This is shown here. This is shown here on this unit circle as well. Periodic with period 2 pi, periodic with period 2 pi, periodic with period 2 pi. So chapter number 2 की बात करें, chapter 3 की बात करें, chapter 4 की बात करें, all these things are correlated with each other, and you have to develop this correlation. So that's why I have simultaneously I have taken you through this time domain and frequency domain, so that कि visualization जो है आपकी both time and frequency domain में वो develop होनी चाहिए. Any questions बेटा? This was the sampling procedure in time domain and frequency domain. Any questions? No sir. सर नेक्स्ट स्लाइड में जो आपने इक्वेशन बनाई है x e की पावर j ओमेगा, सर उसमें जी बता. सर इसमें जो ओमेगा को आपने इसमें चेंज किया, dt ये किस तरह आया है? बेटा ओमेगा क्या होता है? ओमेगा s जो है वो है
2 पाई ओवर टी होता है ना, यस ओमेगा एस 2 पाई ओवर टी, और ओमेगा जो ये रेडियंस पर सेकंड में होता है, कंटिन्यूस टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा जो है वो क्या है, वो 2 पाई है, रेडियंस पर सेकंड, रेडियंस सेकंड नहीं, ठीक है, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। सो अगर मैं कहूँ कि ओमेगा ओवर टी जो है दैट इज ओमेगा, यही कुछ किया हुआ है, यस सर गॉट इट। यस सर क्लियर हो गई बात, चलें, क्लियर है, कोई और कंफ्यूजन किसी को? यस सर होगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। चलें इसको, क्योंकि पिछले सिंडिकेट के साथ भी हमने इसको यहीं तक ही किया था, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, और कल हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलेंगे, सैम्पलिंग प्रोसीजर को, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर को हम फिर इसको इंक्लूड करेंगे इसमें। सो टुडे वी हैव सीन सैम्पलिंग प्रोसेस both in time and frequency domain.